मेरी कोशिश रहती है कि मैं छोटा से छोटा वीडियो बनाऊं जिसमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं और थोड़े विजुअल्स का हेल्प लेके, जिससे कि मेमोरी में वो ज़्यादा टाइम तक स्टोर रहे. Hello students, I am Jacinta. Today we are going to understand charging by induction from the unit 1. Chapter is electric charges and electric fields. So let's start our video. For that, first we will understand the concept of polarization of charge. Charge को polarize कैसे करते हैं? Polarize करना means जैसे मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ. वैसे ही अगर चार्ज की बात कर रहे हैं, वी विल हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अगर किसी सब्सटेंस के अंदर एक जगह पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाए और दूसरे साइड पे अगर नेगेटिव चार्ज, ऐसा अगर हम कर पाएँ, देन वी विल से डैट वो चार्ज जो है वो पोलराइज हो गया, बिकॉज एक साइड उसका पॉजिटिव पोल बन गया और एक साइड उसका नेगेटिव बन गया. So for that we are going to take a insulating stand and on top of it we will keep a metal sphere. Metal sphere, इसके पास electrons होंगे और protons होंगे. Electrons and protons means one is positive and one is negative. Now what will happen here when we will bring a positively charged rod near it? Okay, just near it, we don't have to touch it. टच नहीं कराना है, जस्ट पास लेके आना है, जिससे कि वो उस चार्ज रॉड का जो पॉजिटिव चार्ज रॉड है उसके इन्फ्लुएंस में आ जाए. नाउ व्हाट विल हैपन, मेटल स्फीयर के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज के साइड, रॉड के साइड अट्रैक्ट होना चालू कर देंगे, एंड they are the only one which can move. That's why they are called free electrons. We have taken a metal sphere over here so that they will have free electrons. What are free electrons? Free electron means the electron which are free to move. Metals के पास free electrons होते हैं जो easily move कर सकते हैं. Other substance के पास ये नहीं होते हैं. That's why we are taking here metal sphere. So now पॉजिटिव चार्ज के साइड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हुआ, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रॉड के साइड मूव कर दिए, और व्हेन दे विल मूव दे विल लीव बिहाइंड द पॉजिटिव रीजन, एंड फाइनली एट द एंड what we will find is that in the sphere one side is charged negatively because of the excess of the electrons, and other side is eventually turned into positive region. So in that way we have polarized the charge. We will use the same concept to understand charging by induction. We are going to charge two metal spheres here. So for that definitely we are going to take two metal spheres on insulating stand. Insulating stand so that their charge won't get conducted anywhere. So we are going to take insulating stand. We have to keep the metal sphere in contact such that they are touching each other. Now when we bring a positively charged glass rod near sphere A, it will start attracting the negative charge, the electrons towards it, and some of the negative charge which are present in sphere B will also be attracted towards that positive charge rod. Now they will move from sphere B to sphere A, leaving behind a positive region in the sphere B, and after some time many of the negative charge from sphere B have been moved to sphere A, which makes the sphere A negatively charged and sphere B will become positively charged. Now if we will separate them, then we will find that we have charged both the spheres, one negatively charged sphere, sphere A, and the other one with a positive charge.
Now let us understand how we can charge a single metal sphere negatively without touching it. We know the answer how we are going to do it. Yes, it is charging by induction. So in this, we will take a single metal sphere on the insulating stand, but here we have to connect the sphere to the ground using a conductor, a conducting wire. This will help the electrons to flow. When we bring a positively charged rod towards the metal sphere, it will attract negative charge. Then some of the negative charge will also move from the ground towards the metal sphere. And after some time we will notice that many of the negative charge have been moved from the ground to the metal sphere. And when we will take out the earthing from the metal sphere, we will find that the sphere have been charged negatively. Here you should note that only electrons can move. That's why the negative charge have been moved from the ground to the metal sphere. So now can you say what will happen if negatively charged rod is brought near to the metal sphere instead of positively charged rod in the previous setup? If negatively charged rod have been brought near the metal sphere, then it will repel the electrons present inside the metal sphere. That means the electron will flow from the metal sphere to the ground. पिछले सेटअप में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुए थे तो वो ग्राउंड से बहुत सारे आ गए थे स्फीयर के अंदर. अब इस सेटअप में क्योंकि हम लोग एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आए हैं तो वो रॉड का नेगेटिव चार्ज जो मेटल स्फीयर में प्रेजेंट जो नेगेटिव चार्ज है उनको रिपल करेगा और वो रिपल होकर दूर से दूर जाने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण वो उस कनेक्टिंग वायर के थ्रू ग्राउंड में पहुंच जाएंगे. एंड विच विल लीव बिहाइंड, पीछे क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज तो वैसा का वैसा ही है, वो मूव नहीं कर सकता. सो द स्फीयर विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड. सो डैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप एनिमेशन के साथ में टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा और ये आपको आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिसिटी और इस फर्स्ट पार्ट बुक का जो फर्स्ट हाफ पार्ट है उसमें जो भी हेल्प है वो इस विजुअल से बहुत अच्छा हेल्प मिल जाएगा. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर को समझना, बिकॉज चार्ज इज़ ऑल डिपेंडिंग ऑन इट. आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब रेड कलर से लिखा हुआ है उसे एक बार क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस जो भी मैं अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा. आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और लाइक्स और कमेंट्स के थ्रू थोड़ा सा अप्रिशिएट करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.